Next question on debentures. Satya Limited issued 40,000 8% debentures of rupees 100 each. Full money is payable at application, means it is lump sum and redeemable at par after 4 years. कुछ नहीं कहा है कि इशू एट पार है, प्रीमियम है या डिस्काउंट है. मीन्स द केस इज फॉर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, तो आपको दे ही दिया है. और रिडम्पशन आफ्टर 4 years, उसका अभी इशू के क्वेश्चन में हमको कुछ करना नहीं है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ सत्या लिमिटेड. ओके, so let's start with the first case, issue at par and redeemable at par. You have received in your bank account the amount of debentures 40,000 into 100, that is 4 lakh. So the first entry for receipt of amount in bank due to issue of debentures is bank account debit how much? 40,000 into 100, 40 lakhs. Write in figures. 2. Debenture application, that is at the time of application you receive this money. $40 lakhs. Being application money received on 40,000 debentures. Okay, now let's pass the second entry. That is for debenture allotment. बैंक में पैसा आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन का. नाउ अलॉट द डिबेंचर्स. सो जो अभी आपने जस्ट क्रेडिट किया है डिबेंचर एप्लीकेशन, उसको वापस डेबिट करो. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स है? राइट द परसेंट ऑलवेज, इट कैरीज मार्क्स. सो टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट. So that is again 40 lakhs because case is of issue at par and redemption at par. And for full amount lump sum at the time of application only. So the total comes up to 80 lakhs. So a simple question. Now the next one.